Good morning, students. We are continuing lesson number 2, functions in Excel. Okay. Last time we studied use of AutoSum function for calculating the addition of given values. And that time I told you that there are some other functions also available with the AutoSum option. So first we will discuss about those functions. So first one is average. We can also calculate the average of given values using the AutoSum functions. What is the use of max function? Max function returns the highest value from the selected cells, and opposite of max function is a mean function. It will return the lowest value or minimum value from the selected cells. Even we have one more function, that is count. Count has a other functions also, but the count function calculate the count the number of cells that has a numbers only. Okay, if the cell has a alphabet, then it will not count that cell, or if the cell is blank, it will not count the cell. So these are the other functions available in AutoSum functions. Now we will see how to use average from the AutoSum function. For that, first of all, you put some values and select them. As you can see in this picture, I have selected some values, and then go to the AutoSum option. There is a down arrow. आप down arrow पे click करिए और choose the option average. So it will calculate the average for us. See, 13 is the answer of the selected cells, है ना? So this way we will find the average of selected cell, and it will automatically placed next to the selected cells. Last time हमने पढ़ा था कि AutoSum automatically या तो सेल्स को सेलेक्ट कर सकता है और या फिर आंसर को भी पुट कर सकता है. सो दिस इज द वे वी विल फाइंड आउट एवरेज. नाउ टू यूज अ मैक्स फंक्शन as we did for the average, same we have to do for the max also, but this time in place of clicking on the average, click on the max function, and it will give us the maximum value from the selected cell. Now what was the use of AutoSum? AutoSum में we were not writing the formulas. हम formula write नहीं कर रहे थे, computer were automatically writing the formula for us. Now we have a, in AutoSum we have a limited functions. Now we have a another option या feature that we can use for function, that is function library. function library में क्या है? functions library में various categories में functions हैं. So we have to only see the category and we can use the function. As you can see in this picture, there are various category given like financial, logical, text, date and time, lookup, reference, math and trigonometry, and other functions that are used commonly by the people. हमें जो भी function useful होगा हम वो use करेंगे. So these functions, function library placed in a formula tab. We can use the functions. Now we will only study some of the functions from some of the category, like math and trigonometry category. LCM, as you all are familiar, list common multiples. We can find LCM with the help of LCM function. Fact function gives us the factorials of given value. I hope आप you studied in the mathematics. factorial क्या होता है ना? factorial में क्या होता है? Suppose the number is 3. So what will be the factorial of 3? 3 multiplied by 2 multiplied by 1. If we have to find the factorial of 9, so we will multiply 9 with all the numbers up to the 1. 9 multiply 8, multiply 7, multiply 6, then 5, 4, 3, 2, 1. This way we will find out the factorial. लेकिन हमको नहीं करना है. If we will simply use fact, it will automatically give us the factorial of given value. Power function. Power function returns the number raised to the power, like 2 raised to the power 3. मतलब we will multiply 2 3 times, 2 into 2 into 2, and this will be also calculated with the help of power function. Product function, as you are all are familiar, it will give the multiplication of given values, and some function is giving us the addition of given values. So these are the functions available in math and trigonometry category. There are other also, but
We are only discussing few of them. Now there is another category, text. अब text category में कौन कौन से दे रखे हैं? Concatenate. Suppose there are two strings, text given, two or more than text are given in different cells. If you want to combine them, join them, we will use concatenate functions. Like suppose I have written in one cell computer, another cell I have written the class. तो कॉन्कैटनेट क्या करेगा? कंप्यूटर क्लास को कंबाइन करके दिखाएगा कंप्यूटर क्लास विदाउट एनी स्पेस. ओके. लैंड फंक्शन, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. सपोज आई हैव टाइप द एप्पल वर्ड. अब एप्पल वर्ड में कितने लेटर्स हैं? APPLE है ना. तो 5 लेटर्स का वर्ड है, तो इट विल रिटर्न द 5 टू अस. लोअर फंक्शन, अगर सारे लेटर्स में कुछ लेटर कैपिटल और स्मॉल हैं और हमें का सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, वी विल यूज़ अ लोअर फंक्शन. एंड अपोजिट ऑफ लोअर इज अपर, इट विल कन्वर्ट ऑल द लेटर्स इन अपर केस. सो दीज आर द functions from text category that works on alphanumeric data. Statistical functions, average. We all are familiar. Average return the average of values, max return the maximum value, mean return the lowest value, count return the number of cells that has a numbers. अब one more function I have added here, count a. Count a means it will count all the cells that are non-blank, whether it has a number or whether it has a text. Okay, so these are the part of statistical categories. There are other categories also. If you like, you can use them. Now we will study how to use the already written functions from function library. I am telling you about the LCM. Suppose you have to find the LCM and you have to use a LCM function. For LCM you have to just click on the math and trigonometry category and you click on the LCM function. Now as you can see, I have written some values. So when you click on a LCM function, this type of function argument dialog box will come. Now there are two methods to write the values. अगर आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहते हैं तो एज यू कैन सी नंबर 1, नंबर 2, आप सिंपली यहाँ पे नंबर वैल्यू पुट कर दीजिए. और अगर इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट दिस 24, 12 और 36, तो यू विल सी कि टेक्स्ट बॉक्स के लेफ्ट साइड राइट साइड में एक बटन दे रखा है जिस पे रेड कलर का साइन है. सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड देन क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल. आपको यहाँ पर सेल का एड्रेस सेलेक्ट करना है. देखिए 1 बाय 1 मैंने इन पे क्लिक किया और सेल पे क्लिक किया तो इन्होंने फंक्शन ने सेल एड्रेस एक्सेप्ट कर लिया. आप चाहें तो डायरेक्ट भी सेल एड्रेस लिख सकते हैं. प्लीज़ रिमेंबर, इन टेक्स्ट बॉक्स में या तो डायरेक्ट वैल्यू लिखिए या फिर सेल एड्रेस एंड देन सिंपली क्लिक ऑन द ओके बटन. 72 आंसर इज कमिंग. सो वी डोंट हैव टू राइट द एलसीएम फंक्शन, इट विल automatically write and calculate. Now that was a method to use a function from library. If you know the function syntax, अगर आपको पता है syntax की कैसे फंक्शन लिखना है तो आप मैनुअली भी फंक्शन टाइप कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे सम फंक्शन टाइप किया है. फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन, सो आई पुट इक्वल्स टू, देन आई हैव रिटन सम पैरेंथेसिस. अब नाउ यू हैव टू राइट द रेंज B3 to B5 and press enter. Result will come. Okay, so this way we will use the functions. Now children, when we are using the functions in Excel, sometimes error comes, mistakes आती हैं and that mistakes also tells you कि किस टाइप की मिस्टेक है आप, और उनको समझकर आप उनको करेक्ट कर सकते हैं. So that type of mistake, some few mistakes are given. Like first one given is hash divide. This type of error comes when you try to divide any number with the zero. अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इट गिव्स यू एन एरर. ओके. हैश वैल्यू, जब आप किसी भी फंक्शन को रॉन्ग डेटा टाइप दे देते हैं, रॉन्ग डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इट गिव्स यू this type of error. Now see, suppose I am using some functions only performs on the numbers. Okay, so you will see कि मैंने apple word use किया है, that is a wrong argument, so it will give us this type of value error. Reference error, it comes when the reference is not a valid or
the refer cell is deleted या refer sheet is deleted. Suppose I am finding square root of A2 and A2 cells deleted by me, so then reference error comes. And A, when a value is not available for a function, this type of any problem comes, not available. Okay, so these are the few errors. There are other errors also, but we will study in higher classes. So we should see the error, we should read them, and we should try to rectify the error to get the correct result. Now we will study some more operations in Excel, like insert a new sheet. When you are working in a workbook, you want to insert a new sheet. अगर आपको कोई sheet new insert करनी है तो simply you click on the insert, simply you right click on the sheet. Before that you want to insert a new sheet, or there is an option insert. Click on the insert option. Okay, and insert new sheet will be inserted. Even एक्सेल के डिफरेंट वर्जन्स में इंसर्ट के लिए, इंसर्ट न्यू के लिए भी बटन अवेलेबल रहता है. लाइक सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज़ अ न्यू शीट बटन. तो यू क्लिक ऑन दैट, इट विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ न्यू शीट विद द डिफॉल्ट नेम. During the working, if you want to rename a sheet or giving a name, so what we will do, simply right click on the sheet name and choose the rename option. When you choose the rename option, text box will appear. Erase the previous name and type a new name. After typing new name, please click outside of the box. आप बाहर click कर दीजिए. Sheet will be renamed. Now, if you want to delete any sheet, so what you have to do, right click and choose the delete option. तो शीट विल बी डिलीटेड. इवन आप चाहें तो मूव और कॉपी भी कर सकते हैं शीट को यूजिंग द मूव और कॉपी ऑप्शन. Children, our Excel chapter is over and this is the assignment for this week. As you can see, 1, 2 and 3 exercises have to be completed in book, exercise 4 in a notebook, and in exercise 5 you have to do the questions that are not done by you. Okay, so I have given only specific questions. अगर आपने इनके अलावा नहीं कर रखे हैं तो वो भी आपको करना है, क्योंकि मैंने अर्लियर असाइनमेंट्स में उनको एज ए असाइनमेंट दे रखा है. तो अगर आपने उस समय कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ कंप्लीट दिस टाइम. ओके, थैंक यू.